Today we will do home healing guided meditation. A gentle journey through grounding, awareness, and healing across physical, emotional, mental, soul, and spiritual levels. Take a deep breath in. Deep breathe out. Focus on your breath. Inhale with a smile and exhale with a bigger smile. Let your breath become a soft wave, flowing in and flowing out. Inhale deeply and exhale. Now imagine golden roots gently growing from the soles of your feet, reaching down into the nurturing soil of Mother Earth. Feel these roots anchoring you deeply, bringing steadiness, warmth, and grounding. जिस तरह से एक बड़े पेड़ की बहुत बड़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं, डाउन इन द मदर अर्थ, और वो पेड़ एकदम ग्राउंडेड होता है. किसी भी आंधी तूफान में उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और उसकी लीव्स, उसके फ्रूट एकदम हेल्दी होते हैं. फ्रूट से भरा हुआ होता है वो लदा हुआ पेड़. उसी तरह अगर हमारा रूट चक्र, हमारी रूट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं तो हम कहीं पे भी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में एंग्शियस फील नहीं करेंगे, डिप्रेस्ड फील नहीं करेंगे और बहुत कामनेस के साथ हर सिचुएशन से डील करेंगे. तो आपने विजुअलाइज करना है कि आपके पैरों से बहुत बड़ी बड़ी रूट्स धरती के अंदर जा रही हैं, इन द डीपेस्ट कोर ऑफ द अर्थ. और अब उन रूट्स के थ्रू आप धरती से अपने अंदर वो एनर्जी रिसीव कर पा रहे हो. ग्रीन कलर्ड एनर्जी अर्थ से आपके अंदर आ रही है उन रूट्स के थ्रू. विथ एवरी इनहेल ड्रॉ अप द नरिशिंग एनर्जी ऑफ द अर्थ इनटू योर बॉडी. जैसे जैसे आप इनहेल करते जा रहे हो तो धरती के अंदर से वो ग्रीन, फ्रेश, वाइब्रेंट, नरिशिंग एनर्जी को अपने अंदर इनहेल कर रहे हो थ्रू योर रूट्स. लेट दिस एनर्जी राइज इनटू योर लेग्स, योर हिप्स, and gently into your womb space.
ये फ्रेश वाइटल नरिशिंग एनर्जी आपके लेग्स के थ्रू, हिप्स के थ्रू आपके वूम एरिया में एंटर कर रही है. दिस वाइटल एंड नरिशिंग एनर्जी entering into your womb space. Now place your hands over your lower belly. Place your both hands over your lower belly. Feel the warmth of your touch, bringing comfort and connection. अपने वूम पे आपने अपने हाथों का टच को फील करना है, वो कंफर्ट और वार्मथ को फील करना है. एंड फील द कनेक्शन. लेट योरसेल्फ बिकम फुल्ली प्रेजेंट. लेट गो ऑफ एनीथिंग from before or after this moment. You are safe, you are supported, you are home in your body. Inhale deeply and exhale. Now shift your gentle attention to the space just below your navel, your womb space. It may feel quiet, tender, heavy or glowing. जो भी आपको अपने वूम स्पेस में फील हो रहा है उसको एक्नॉलेज करो. चाहे क्वाइट फील हो रहा है, टेंडर फील हो रहा है, हैवी फील हो रहा है और ग्लोइंग फील हो रहा है. एक्नॉलेज दिस एंड फील दिस. All sensations are welcome. Whatever you are feeling here, acknowledge and welcome that feeling. This is your sacred inner temple, your center of creation, emotion, and feminine knowing. Now visualize a soft sphere of light in your womb. It could be peach, rose gold, or golden white in color. A round circle of light. Let it gently pulse with your breath. Just notice it. Be with it and listen. जैसे जैसे आप इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, ये स्फीयर ऑफ लाइट वाइब्रेट कर रहा है. जस्ट सी दिस, जस्ट फील इट एंड लिसन. इज देयर एनीथिंग योर वूम wants to show you? Speak to you? Let yourself simply receive that message.
जो भी आपका वूम स्पेस आपको दिखाना चाहता है, आपसे बोलना चाहता है, उस मैसेज को जेंटली रिसीव करिए। Now bring awareness to any physical discomfort. जहाँ पे भी बॉडी में आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अपनी जेंटल अटेंशन वहां पे ले जाइए। वेदर फ्रॉम प्रोसीजर्स, एग्जॉशन और लॉन्ग हेल्ड टेंशन। Imagine these sensations as dense grey clouds resting in your womb. Now visualize a warm golden light entering through the top of your head. Let it slowly flow down your body, through your chest, through your belly, and into your womb space. As this light arrives, feel it surrounding the grey clouds, softening them with each exhale. Feel the clouds gently lifting, dissolving into the light. Now let your body soften and let your womb feel lighter, calmer and more free. Within your womb, there may be waters of emotions, grief, sadness, guilt, or longing. Imagine these emotions as gentle droplets swirling in a still pond. Some might feel heavy, others fragile. Now see the golden light within your womb begin to gently swirl, forming a warm spiral of compassion. With each breath, this spiral gathers the emotions droplet and transforming them into shimmering mist. ये गोल्डन लाइट
ग्रीफ, सैडनेस, गिल्ट और लॉन्गिंग की ड्रॉपलेट्स हैं जो पॉन्ड पे swirl कर रही हैं। उनको ट्रांसफॉर्म करके शिमरिंग मिस्ट के रूप में बना रही है। Sparkling light. With each exhale, release. Let go of the emotions that are ready to be freed. Feel yourself becoming emotionally lighter. Let your womb be filled now with a soft sense of peace and compassion and love. Now tune into the thoughts and beliefs that may have settled into your womb. Thoughts of self-doubt, shame, fear, or pressure. Visualize them as tiny stones lying at the base of your womb. Some may have been there a long time, from years. With your next few breaths, allow the golden light to flow gently over these stones. See them softening, lightening, and dissolving. Feel your mind becoming quieter, your thoughts slowing down, your inner voice becoming more kind. There is nothing you have to prove, nothing you have to fix. You are enough as you are. Now invite your soul to be fully present in this space, in this womb space. If pieces of yourself have felt scattered through pain, loss, or trying to be strong, imagine those parts as golden petals floating back to you. See them gently returning to your womb, your heart, your being. Each petal brings a piece of your truth, your joy, your purpose. You are returning home to yourself. You are becoming whole again. Feel
your womb glowing as your full soul self gently integrates and rests here. Now visualize a radiant golden column of light flowing from the sky through your crown into your womb. A radiant golden light ग्लो कर रही है from your head to your womb space. This is divine love, pure, gentle, ever present. This light is coming from sky to your crown chakra, to your womb space. Feel this light filling you with hope, with remembrance, with faith, with love, with kindness, with compassion. Even in moments of silence, you have never been alone. You have always been held by something greater. Let your womb soak in this light, in this radiant golden light, restoring your connection to the sacred, the divine feminine, and the universe within you. Now see the golden light expanding, gently filling your entire body. जो आपके वूम में गोल्डन लाइट थी वो वूम स्पेस से एक्सपैंड होके जेंटली आपकी एंटायर बॉडी में रेडिएट हो रही है, फैल रही है. फ्रॉम योर वूम into your heart, your throat, your mind, and beyond. Let your body rest in this glow. Let it imprint this healing into your cells. Place your hands back on your womb. Offer her your love. Whisper a thank you for her resilience, her wisdom, and for holding so much. Set a soft intention for how you will continue to honor this sacred space through stillness, nourishment, movement,
और क्रिएटिविटी। एक इंटेंशन सेट कीजिए कि आप इस सेक्रेड स्पेस को, होम स्पेस को कैसे ऑनर और रिस्पेक्ट करोगे। थ्रू स्टिलनेस, थ्रू नरिशमेंट, थ्रू मूवमेंट और थ्रू क्रिएटिविटी। Choose one to honor your home space. When you are ready, take a few gentle breaths. Move your fingers and open your eyes slowly. You are grounded. You are glowing. You are whole. And now keep your right hand on your heart and repeat after me. My womb is a sanctuary of healing and renewal. I release the past and welcome love, light and wholeness. I honor my journey and I trust my timing. I am connected to my soul, my body, and the divine within me. I am safe to heal, express,